I welcome you all to my YouTube channel Anjanas Education. Today we are here to discuss a new unit 4 of the portrait of a lady. And before that, I would like to suggest you please uh, watch my previous video. The link is given below. पूर्व भिडियो देखते समस्ते मोर अनुरोध जहाद्वारा टपिकटी भल भाव बुझी हे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी that means it is said about his grandmother writer जेजेमांकर कथा कहुई इन द प्रीवियस क्लास we discussed पूर्व क्लास रे आम डिस्कसन करथिले that how did the writer close with his grandmother तांको जेजेमांक सहित से केभली जड़ित थिले how was his life there in the village along with his grandmother and how did the life change there in the city when they moved to city from village. So in this way, that means actually in three phases the life of the writer and the life of the grandmother had been changed. एभली भाव में तीन सेक्शन भाव में विभक्त होता प्रथम वी केम टू नो अबाउट द राइटर्स ग्रैंड मदर हाउ मच दे वर क्लोज टू ईच अदर देन वी केम टू नो अबाउट द विलेज लाइफ हाउ डिड दे स्पेंड देयर टाइम टुगेदर से किभली समय बिताउले बाय गोइंग टू द स्कूल एंड टू द टेम्पल यूज टू प्रेयर यूज टू सिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स दे यूज टू डू इन द विलेज एंड व्हेन दे मूव टू सिटी जिते से मूव सिटी को मूव कले द लाइफ चेंज्ड द लाइफ चेंज जीवनटी परिवर्तन होता देर वाज नो दैट मच अटैचमेंट बिटवीन द राइटर एंड राइटर्स ग्रैंड मदर जेजेमा भितर एत डिस्कसन हो पार ना से टाइम स्पेंड कर एक्चुअली द राइटर यूज टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड देयर ही स्टडीड से पाठ पढ़ुले एंड द टॉपिक्स व्हिच the writer was being taught at the school the writer's grandmother didn't know much about it and that is why she was not showing her concern on those particular subjects and topics से सब विषय से ध्यान दे पार नथिले काहे ना तांकर से ऊपर ध्यान नथिले जोटा हम पूर्व क्लास रे पढिथिले सो वी आर मूविंग द नेक्स्ट यूनिट हियर how did the life change again when the writer or Khushbant Singh moved to abroad and when he went abroad for his further studies बाहर को गला पर तांकर लाइफ किभली चेंज होइतिला एंड हाउ डिड देयर रिलेशनशिप स्टार्ट से परि भाबरे तांकर रिलेशनशिप व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट सो आई टोल्ड यू दैट ही डिसाइडेड टू मूव टू अब्रॉड for his further studies and he knew that his grandmother would not feel happy for that and that is why she looked upset से जानी थिले जे तांको जेजेमा एथरे खुशी हेबे नै आ आ द्वारा कोन होतला जो जेतोले से बाहर को जाय पे बा फॉरेन को गले तांकर फर्दर स्टडीज पे द राइटर्स ग्रैंडमदर डिडंट लाइक इट एंड शी was looking upset while the writer started moving and while the writer decided to go abroad for further studies then I was sure my grandmother would be upset से जानी थिले जे तांको जेजेमा एथरे खुशी हेबे नै I would be away for 5 years and the writer decided to move abroad for 5 years it was a long day that he had to spend there abroad बाहर तांको 5 वर्ष पाठ पढ़िबार थिला एंड फॉर हिज हायर एजुकेशन फॉर हिज फर्दर स्टडीज ही मूव टू अब्रॉड बाहर को जाइथिले एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल but my grandmother could she was not even sentimental and she didn't express her emotion before her grandchild Khushbant Singh writer जेजेमा सेतबेले सेतिकी इमोशनल हो जाइथिले but she still didn't show or didn't expressed her emotion before her grandchild तार छुआ सामने बा तार नाती सामने तांको नाती सामने से टोटल सेंटिमेंटल हो नथिले बा इमोशनल हो नथिले सी एक्चुअली तांकर भीतर से चापी कर रोकी देथिले बट सी डिडंट एक्सप्रेस बिफोर द ग्रैंडचाइल्ड खुशबंत सिंह कर सामने किंतु एक्सप्रेस करि पार नथिले को दुख जेतेबेले हर ग्रैंडचाइल्ड डिसाइडेड टू मूव टू अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडीज जेतेबेले से डिसाइड करले 5 वर्ष पय बाहर को जिवे सो व्हाट हैपेंड देयर जिते जीवा समय कौन होता सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन एक्चुअली द राइटर्स ग्रैंडमदर केम टू द रेलवे स्टेशन फॉर द लास्ट मीटिंग शेष देखापी सी आसी एंड व्हाट इट हैपेंड और व्हाट हैपेंड देयर सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन मत छाड़िया आसते रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन कौन प्रकार आवेग आसी नथिले सी कौन प्रकार भावना से देखे नथिले एंड सी डिडंट इवन टॉक टू हिम कथा भी भलसे ही नथिले ओनली थिंग द राइटर नोटिस्ड गोटे जिनस से नोटिस करथिले दैट व्हाट हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स दैट मीन्स हर लिप्स एन्चांटेड
समथिंग किसी जिनस उच्चारण करुला लिफ माने उठो हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर दैट मीन्स द राइटर्स ग्रैंडमदर वाज कंप्लीटली लॉस्ट इन प्रेयर केवल मंत्र आ प्रार्थना से व्यस्त थे एंड सी डिडंट इवन टॉक टू हर ग्रैंड चाइल्ड खुशबंत सिंह व्हाइल ही वाज मूविंग टू एब्रोड जो से बाहर को जावाई गले फॉरेन को गले फॉर हिज फर्दर स्टडीज फॉर 5 years इट वाज देयर लास्ट मीटिंग बिफोर गोइंग टू द और बिफोर गोइंग एब्रोड जीवा पूर्व यह शेष देखा विथ द ग्रैंडमदर एंड द राइटर्स ग्रैंडमदर डिडंट टॉक टू हिम तांको कथा हले नहीं कि जेजेमा जमा भी कथा ही पारले नहीं बिकज सी वाज बिजी इन हर प्रेयर तांकर प्रार्थना से व्यस्त थे हर फिंगर्स वेर बिजी टेलिंग हर बेड्स ऑफ हर रोसारी एंड ऑल्सो इन वन हैंड व्हाट सी वाज डूइंग एट दैट टाइम से आउ गोटे हाथ धरिक से कौन करते एक्चुअली सी वाज बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोसारी से जो माली से काउंट करते जोटा आम कहूँ जपमाली जपुले साइलेंटली सी किस्ड माय फोरहेड विथआउट टेलिंग नथिंग बा विथआउट टेलिंग एनीथिंग कौन कले से किस करले ऑन द फोरहेड जोटा कहवा आम कपाल गोटे टिके किस करते से द लास्ट टच इट वाज एंड इट वाज द लास्ट फिजिकल कंटाक्ट बिटवीन दोज टू पर्सन द ग्रैंडमदर एंड द राइटर जेजेमा और राइटर भितर एति कंटाक्ट आउ से कथा भी हो पार नथिले इट वाज देयर लास्ट मीटिंग व्हेन आई लेफ्ट जेतेबेले से छाड़ी गले रेसिडेन्स आम कहवा से जगह घर छाड़ी गले जो बाहर को पढ़ापी जेजेमा आसते रेलवे स्टेशन छाड़ापी बट इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ऑन द पार्ट ऑफ ग्रैंडमदर जेजेमा पक्षर बहुत कष्टदायक थिला एंड ओनली थिंग सी डिड सी किस्ड ऑन द फोरहेड ऑफ द राइटर जो से छाड़ा गले आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट तिक्तता मोइस्ट कहले तिक्त इम्प्रिंट कहले छापी रही सो आई चेरिस्ट माने चेरिश पास्ट टेंस होची चेरिस्ट एंड द मीनिंग ऑफ चेरिश होची मने पकाइबा चेरिस्ट कहले मने पकाइले आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट एज perhaps the last sign of physical contact between us it was the last physical contact between those two माने द राइटर एंड राइटर्स ग्रैंडमदर एटा थिला तांकर शेष फिजिकल कंटाक्ट ता पूर्व तापर आउ राइटर जेजेमा सहित राइटर आउ देखा नहीं सो इट वाज द लास्ट कंटाक्ट बिटवीन द राइटर एंड राइटर्स ग्रैंडमदर बट वाज नॉट सो आफ्टर 5 years I came back after 5 years the writer again once again he came back to his village and his home and was met by her at the station again the writer met to his grandmother at the railway station आउथर स्टेशन देखाला she didn't look a day older तापर भी से गोटे दिन भी माने बुढ़ी भाया अधिका बुढ़ी भाया भी देखा जाऊ नथिले सी वाज रिमेन्ड सेम एज सी वाज देयर 5 years back 5 years back रे जेमती देखा जाउथले 5 years पर भी से भली ही थिले देयर वाज नो चेंज so she still had no time for words she didn't even talk to her grandchild खुशबंत सिंह after coming back to his home city बा तांकर घर को आसिक पहुँचला पर भी राइटर जेजेमा कथा नथिले एंड व्हाइल सी क्लास्प द मीनिंग ऑफ क्लास्प होची हग करबा बा कोलाग्रत करबा आलिंगन करबा क्लास्प रो पास्ट टेंस होची क्लास्प्ड सो हियर the writer finally came back to his town and there he met his grandmother once again after 5 years 5 वर्ष पर पुणी थोर देखाला and the writer's grandmother didn't look a day older गोटे दिन भी से पुराना देखा जाउनथले बा वृद्ध देखा जाउनथले का वृद्धा देखा जाउनथले she was remained same से भला सेम ही थिले she still had no time for words that means she didn't talk to her grandchild कथा हे नांते and while she clasped me in her arms जते बेले से कोलाग्रत कले बा आलिंगन कले I could hear her reciting her prayers से एक्चुअली से कौन करथिले while she clasped द राइटर जो से हक करले बा किस माने कोलाग्रत कले से टाइम रे कौन देखिले जे हर ग्रैंडमदर हिज ग्रैंडमदर वाज रिसाइटिंग हर प्रेयर कौन करथिले से प्रार्थना बोलुथिले इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट्स वेर विथ हर sparrows whom she fed longer and with frivolous rebuks we can write the meaning of frivolous rebuks the meaning of affectionate scolding माने स्नेहर किछि समय स्नेहर किछि moments that she shared with her sparrows as I told you in the previous class that she used to feed the sparrows in the veranda रे से कौन करथिले कटियाड रे खाइबा को दउथिले स्पैरो मानको and it was in the afternoon मध्याह्न सॉरी अपराह्न समय रे she used to feed to the sparrows and it was the happiest hour of her life से थिला से माने माने एन्जॉयबल हाफ एन आवर से आधा घंटा थिला तांकर लाइफ रो सबुठ खुशी रो दिन and at that particular time she got relaxed
थ्रू आउट द डे समग्र दिन में से गोटे अध घंटा ही गोटे खुशी वातावरण थिला एंड सी यूज टू स्पेंड टाइम विथ द स्पैरोज बट बिफोर दैट सी यूज टू स्पेंड हिज टाइम ऑल द टाइम with her grandchild Khushbant Singh. But when Khushbant Singh was busy in his education, in his study, the writer's grandmother was left alone at home. घरे से एकुटिया हो गले and she was busy in reciting prayers, spinning wheels and feeding to the sparrows. ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ ବୁଣାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଠ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ବିଜି ଥିଲେ to feeding or to feed sparrows घर चोटिया मन को खाଇବା द्वारा व्यवस्थित थे so we will move the next that when the writer came back to the house or to home city after 5 years he saw something that his grandmother was reciting her prayer तांकर मंत्र पाठ कर प्रार्थना चलची even on the first day of my arrival प्रथम राइटर आसीबार प्रथम दिन ही that was being continued by the writer's grandmother writer जेजेमा कंटिन्यू करी चलैथिले ए सब जिंस and she didn't even talk to the writer from the first day of his arrival. There was no conversation between the writer and writer's grandmother. तांको भीतर सेमती किसी कथावार्ता नथला and as usually the writer's grandmother didn't want to spend her time with the writer because she knew that the writer from the beginning of his childhood days and the writer was quite different today. वर्तमान राइटर ता पूर्वर राइटर टिके अलगा थिले and she was busy in her schedule and that is why she didn't give that much time to the writer. एमती भाव राइटर को से समय दे पानुथिले से सब बेले तांकर प्रार्थना मंत्र पाठ ए सब रे बिजी रहउथिले. So on this day actually what happened से दिन कौन है she didn't pray in the evening a change came over her गोटे प्रकार परिवर्तन आसला in the life of writer's grandmother in the evening से दिन संध्यारे she didn't pray से दिन से प्रे कले नहीं she collected the women of the neighborhood पाख पड़ोसी थिवा समस्त स्त्री लोगों घर को डाकी आनले बा there was a gathering got an old drum गोटे ड्रम आनले गोटे and started to sing and she started singing से दिन कथा कुआ संध्यार कथा कुआ for several hours she thumped and sagging skins of dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. So on that particular day there was a change came over her गोटे प्रकार परिवर्तन आसला. she started singing by beating the drum hard बहुत जोर से ड्रम को मारी मारी से कौन करथिले बजै बजै गीत गाइबाटा स्टार्ट करथिले and she was looking tired on that particular day से दिन से बहुत क्लांत भाया देखा जाउथले for several hours it was continued बहुत समय पर्यंत एभली नाच गीत माने गीत चलिला and she was singing a song of homecoming warriors युद्ध फेरंता योद्धा मानकर युद्ध फेरंता सैन्य मानकर पई गोटे गीत गाइला भली गोटे गीत थिला that she started singing by beating the drum hard बहुत जोर रे मारी मारी से गीत गाउथले थम्ड माने पापुल रे जोर रे आघात करबा dilapidated कहले the passions of dilapidate तार अर्थ होची कोन इन ब्लाइंड कंडीशन आम कहीपर इन बैड कंडीशन गोटे बहुत जोर रे मारुले दैट मीन्स इट वाज साइनिंग अप समथिंग डिफरेंट वाज गोइंग टू हैपन किसी गोटे जिनस खराब जिनस होगा जाऊला इट वाज दैट काइंड ऑफ साइनिंग एभली गोटे जिनस परिवर्तन आसला एंड वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड कंस्ट्रेनिंग द मीनिंग ऑफ परसुएड कहले प्रवर्ताइबा आउ ओवर स्ट्रेनिंग कहले अत्यधिक परिश्रम एक्चुअली द फैमिली मेंबर्स शुड persuade her to they should try to stop her but they didn't do so. That was the first time since I had known her that she didn't pray and it was for the first time she didn't sing that song or she didn't pray. एभली गोटे दिन था जो प्रथम थर देखी राइटर जे तांकर जेजेमा गीत बा मंत्र पाठ करू नथिले माने मंत्र कहले प्रार्थना करी नथिले से दिन इट वाज द फर्स्ट टाइम द राइटर विटनेस दैट हिज ग्रैंडमदर डिडंट प्रे से गोटे एभलिया गोटे दिन था जो दिन से गीत माने प्रार्थना पढ़ी नथिले बा प्रार्थना पाठ कर नथिले व्हाट सी डिड ऑन दैट डे और व्हाट सी वाज डूइंग एट दैट टाइम से बोले कौन करले दैट सी स्टार्टेड सिंगिंग इट वाज कंटिन्यूड फॉर सेवरल आवर्स एंड सी sang a song which kind of song it was actually the homecoming of warriors युद्ध फेरंता सैनिक मान से जो गोटे गीत गाउतले से गीत चलता जोर सोर रे कहली द मीनिंग्स ऑफ थम्प्ड
dilapidated जोर ये को प्रहार करी गोटे ब्लाइंड वे बा गोटे बैड कंडीशन रे से गाउथले से गीत दैट मीन्स सी फेल्ट अनहैप्पी दैट वी कैन से बा सी वाज नॉट satisfied whatever it may be. We will discuss in the next paragraph. We will come to know about it. Why did she start singing कौन पाई से गीत गाइबाटा स्टार्ट करते एंड व्हाई डिडंट सी प्रे ऑन दैट डे से दिन से कहीं गीत गाई नथिले. सो वी आर मूविंग द नेक्स्ट पैराग्राफ. द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल. सो नाउ से बर्तन असुस्थ हो जाते कि जेजेमा. इट वाज ए मिल्ड फेवर साधारण ज्वर था एंड द मिल्ड फेवर कहले साधारण ज्वर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. व्हाट द डॉक्टर सजेस्टेड एंड व्हाट द डॉक्टर सेड टू द राइटर्स फैमिली अबाउट द हेल्थ ऑफ ग्रैंडमदर को हेल्थ विषय कौन कहले दैट इट इज जस्ट अ मिल्ड फेवर. इट वाज जस्ट अ मिल्ड फेवर एंड इट वुड गो जल्दी भल हो एंड ही वुड सी वुड गेट वेल सुन. जल्दी भल हो से कथा किए कहले डॉक्टर कहले. But my grandmother, that means the writer's grandmother, thought differently. She knew about her health. से जानी थिले तांकर स्वास्थ्य अवस्था कथा कौन हवाक जोतला भी she actually knew about it. से जानी थिले. She told us that her end was near. That means she was about to die. She told her family members. से तांकर समस्त मेंबर मान को कहले my death is nearing. माने मोर मरिवाटा सुनिश्चित हो गलानी मु मरिबा पय जाउछि बोली कि she said directly to the family members. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she bad omitted to pray. Just she omitted to pray and it was the first time that she didn't pray. It was the first and last day that she didn't sing or she didn't प्रे. से दिन प्रथम दिन थिला बा शेष दिन थिला तांको पय जो दिन से प्रेयर करले नाही. सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर जेतेबेले से शेष माने प्रार्थना पाठ करिया पय जाउछन सेतेबेले से कहले सी ओमिटेड टू प्रे माने प्रे करिया पय से चाहिले नाही. सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टू टॉकिंग टू अस. सो सी डिडंट वांट टू वेस्ट हर टाइम एंड बिफोर फ्यू आवर्स शी डिसाइडेड टू प्रे and she didn't want to waste her time anymore to talking to the family members. से चाहू नथिले आ कथा हेकर समय नष्ट करबा पई and she started her prayer. We protested कि the family members of the writer and the family members of the grandmother protested but she ignored our protest. से आ खातिर कोले नाही. She lay peacefully in bed praying and telling her words and she started her prayer. बेड रे पड़ी करी ही से तांकर प्रार्थना पाठ आरंभ करले and she also started telling her beards बा रोसारी बा तांकर चोपा माली पाठ करबा आरंभ कले आ तांकर चोपा माली धरि करी तांकर काम जो थिला ये सेडा आरंभ कले. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट her lips stopped moving. The rosary fell from the lifeless fingers. Finally, as she told that her death was nearing and she was about to die, few moments later किछि समय परे that was proved. बुझियला तांकर कोन हेतिला अति अल्प समय भितरे her lips stopped. तांकर ओठ बंद हो जाइतिला and before that she enchanted and she pronounced and she prayed and she was praying before that. ता पूर्व से प्रे करुथले and what happened suddenly कौन हला हठात her lip stopped moving and her rosary fell from lifeless fingers. तांकर से जप माली गुडाक तळे पड़ी गला from her lifeless fingers. जीवन नथिबा से आंगुठी मध्यरु गली पड़ला से होची कोन रोसारी बा जोटा को हमें कहछु जपमाली. ए पीसफुल पैलर वी कैन राइट द मीनिंग ऑफ पैलर कहले मलिन बा शिथिल पड़ी जिबा बा सेता हो जिबा बा धळा पड़ी जिबा. ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस. धळ माने तांकर फेस रे देखा गला जे देयर वाज एंड सी लॉस्ट अनकॉन्शियस अभी माने चेता हरिथिले एंड देन वी केम टू नो दैट माने गोटे प्रकार कलर आस जाइतला ऑन द फेस ऑफ द राइटर्स ग्रैंडमदर एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड एंड फाइनली वी केम टू नो दैट शी वाज डेड. बर्तमान समस्ते जानी पारले जे राइटरंकर जेजमा आउ ए दिन माने ए पृथ्वी रे आउ नहांती. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड रो उठेले द मेंबर्स ऑफ द हाउस एज इज कस्टमरी माने नियम अनुसार बा ट्रेडिशन बा कल्चर अनुसार लेड हर ऑन द ग्राउंड तांको भूमि रे रखिले एंड कवर्ड हर विथ रेड स्रूड्स गोटे नाली कपड़ा रे तांको घोड़ाइले. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग दुख माने मॉर्निंग कहले लेमेंटेशन बा दुख वेदना जणाइबा बा दुख शोक प्रकाश करिबा सरला परे मॉर्निंग माने शोक प्रकाश करिबा. स्रूड कहले गोटे रेड कलर रो वस्त्र शव दाहन वस्त्र जोड़ा कहछु. वी लेफ्ट हर अलोन. एक्चुअली द डेड बॉडी वाज पुट ऑफ द बेड
and it was kept on the ground, ତାକୁ ରଖାଗଲା ground ଉପରେ, and left her alone and to make arrangements for her funeral କହିଲେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାର ଯେତିକି ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା as per the Hindu culture it was continued, ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, they all made the arrangements for her funeral, ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର preparation ଆରମ୍ଭ ହେଲା. In the evening we went to her room with a crude stretcher. With the stretcher they all went to the room of the grandmother in the evening. ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ରାଇଟରଙ୍କର ଜେଜେମାଙ୍କର ରୁମ୍କୁ and to take her to be cremated, ଶବଦାହ ପାଇଁ ନେଇକରି ଗଲେ. the meaning of cremated ହେଇଛି ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲେ. the sun was setting and had lit, ମାନେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. Actually there was shining of golden light while the person the writer's grandmother was being moved from the house. ମାନେ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, it was the time of sunset, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ, and there was light in the house. ତାପରେ ଲାଇଟ୍ କିଛି ପଡ଼ିଥିଲା, and that was in the veranda with a blaze of golden light ମାନେ କିଛି ଆଲୁଅ କିରଣ ଟାଇପ୍ର ଆଲୁଅ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା. that was the signing of death of someone, କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ସେଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା. we stopped halfway in the courtyard, ସେମାନେ courtyardରେ କିଛି ସମୟ ରହିଗଲେ. all over the veranda in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in her red suede. ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ କ'ଣ କରାଗଲା, in the red suede ତାକୁ ମାନେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପୁରା ନାଲି ବସ୍ତ୍ରରେ ଆବରଣ କରାଗଲା. thousands of sparrows sat scattered on the floor, and what they saw while the dead body or the ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀରଟି ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଉଥିଲା ଘରୁ ମଶାଣିକୁ, the family members of the house and the family members of the writer saw something and noticed something. କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ while the dead body was being moved from the house, ଯେତେବେଳେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ମଶାଣିକୁ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, in the courtyard that all over the veranda in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red suit, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କଲର୍ର ପୋଷାକରେ ବା ଶାଢ଼ୀରେ ତାଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା. thousands of sparrows, ପାଖାପାଖି ହଜାରରୁ ଅଧିକା ମାନେ ଚଢ଼େଇ ଆସିକରି sat scattered on the floor, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସିକରି ବସିଥିଲେ କେଉଁଠି, on the floor near the dead body ପାଖରେ. କାହାର ଡେଡ୍ ବଡ଼ି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି, the grandmothers. so there was no chirping, there was no noise created by those birds ବା sparrows. ସେଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆଉ କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ କରୁନଥିଲେ, ଚିର୍ପିଂ ବୋଲିକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଏଜ୍ କରୁନଥିଲେ. that they also knew that their closed person died, ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ଲୋକଟିର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି. we felt sorry for the birds, the writer and his family members felt sorry for the birds and my mother. ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ରାଇଟରଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ସରି ବା କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲେ ବାର୍ଡ଼କୁ, that there was no grandmother, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜେଜେମା ସେଠି ନଥିଲେ, the grandmother was no more, and it was a hard time on the part of the birds also and the sparrows also. ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଦିନ ଥିଲା, because every day they used to meet to the grandmother, but today the grandmother was not there, grandmother ଆଉ ସେଠି ନଥିଲେ, and that is why the family members of the house felt sorry for the reason. ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ. but soon after that, ଆପରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି, the writer's grandmother fetched some bread for them, କିଛି ଟୁକୁଡ଼ା ରୁଟି ଧରିକିରି ଆସିଲେ. ଫେଚ୍ ମାନେ ଆଣିବା, କିଏ, ରାଇଟରଙ୍କର ମା ଯାଇକରି ଆଣିଲେ. and she broke into little crumbs, କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ାରେ ଖଣ୍ଡ କଲେ, and she threw it to them, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଫୋପାଡ଼ିକି ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ. but the sparrow took no notice of the bread, they didn't see and they didn't even notice the bread. only thing they watched at that time, ଗୋଟେ ଜିନିଷ they were watching at that time, କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, that dead body, that the grandmotherଙ୍କର ଜେଜେମାଙ୍କର ସେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ. and they didn't notice the breads thrown by the writer's mother, ରାଇଟରଙ୍କର ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥ୍ରୋ କରାଯାଇଥିବା ସେ ବ୍ରେଡ଼କୁ ଜମା ବି ସେମାନେ ଦେଖୁନଥିଲେ. and she didn't the sparrows didn't notice it. then ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, when we carried my grandmother's corpse ବୋଲି କହିଲେ ମର ଶରୀର ବା ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମର ଶରୀର ନିଆ ହେଇଗଲା, when it was carried by
the family members, the dead body of grandmothers ଯେତେବେଳେ ନିଆଗଲା, all the sparrows flew away silently from there, ଅତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ଶାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଚାଲିକିରି ପଳେଇଲେ. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. In the next morning the sweeper came and the servant came and she started sweeping and she swept the bread crumbs into the dustbin. ତାପରେ ସେ ପରଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, in this way the chapter was ended, in this way the story of the writer's grandmother was ended. It was very heartbreaking. If you have come across your grandparents, जदि तुम जेजे बापा जेजे माँ संस्पर्श आसो, you might have known it, the experience, the moments which was so crucial. बहुत अत्यंत बहुत गुरुत्वपूर्ण दिन थिला एक्चुअली से राइटरंकर पक्षरे, एंड इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर टू फॉरगेट ऑल दोज मोमेंट्स स्पेंट बाय हिम विथ द ग्रांडमदर. जेजेमाँ सहित बीते गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त गुड़िक से गोटी गोटी कर मन पकाउला, एंड सी वाज एंड द राइटर वाज नॉट एबल टू फॉरगेट इट. each and every moment it was there and he used to cherish. से सब बेले याकू रोमंथन करते मन पकाउले सब बेले. इन द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर केम, झाड़ू वाला झाड़ू जे करे सी आसीथिला घर को, एंड सी स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, सब टुकड़ा को से डस्टबिन रे नहीं पकई देथिला. इन दिस वे द चैप्टर वाज एंडेड. एभली भाव चैप्टर एंड होइछि, एंड इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू टेल यू दैट इन दिस वे द राइटर said about his grandmother's story, how they were close to each other, and the writer was not able to forget